shoe points on this meridian. Okay, so we are already done with lung and pericardium. We will start today with another meridian, which is heart. Okay, so heart is a meridian which is a yin meridian or yang meridian. It's a yin meridian, correct? What is the meaning of yin meridian? Yin meridian is a meridian that flows from the yin part of the body. So yin part, heart meridian is a meridian which is flowing in the leg or the arm or the chest. It is a meridian which is flowing in the arm. Okay, so if it is flowing in the arm, it's in the yin side. Yin side means this side is the yin side, this side is the yang side. So you can locate the points of heart meridian on the yin side of the arm. Is this okay? Clear to everyone? So I'll just note down important things about this meridian. Note it somewhere. I'm sharing my screen. So if we are talking about heart, meridian. So what type of meridian is this? This is a yin meridian. It's a small meridian. That is the beauty of this meridian. That जैसे बचपन में होता था ना स्कूल का सिलेबस या चैप्टर पढ़ने के टाइम इफ यू फाइंड अ चैप्टर टू बी वेरी लॉन्ग तो वो बड़ा मुश्किल लगता था पढ़ने के लिए. सो सेम थिंग, अगर यूबी के मेरिडियन को सीखेंगे ना तब उसमें लगेगा ओ माय गॉड देयर आर 67 पॉइंट्स इन दिस मेरिडियन. बट इस मेरिडियन में आपके पास सिर्फ 9 पॉइंट्स. सो दिस इज अ वेरी सिंपल and easy to understand meridian. So out of these 9 meridians, if we are talking about shoe points, what are shoe points? Shoe points are the points which belong to 5 elements. You understand that? ये बात सबको समझ में आ रही है? What are shoe points? Shoe points are the 5 element points which are present on each and every meridian. So 5 shoe points belong to like wood, fire, earth, metal, and water. What does it mean? It means that on like any other meridian, on heart meridian also, we have a wood point, we have a fire point, we have a earth point, a metal point, and a water point. So we at least we should understand the classical location of all the 5 shoe points. That is very important. इतना तो पता होना चाहिए कि ये 5 shoe points का classical location हार्ट के मेरिडियन के लिए क्या है. सो फॉर wood point, which one is a wood point for heart meridian? It is your H9. H9 is the wood point. What is fire point? H8 is the fire point. Earth point, H7 is the earth point. What is metal point? H4 is the metal point. What is water point? H3 is the water point. That means heart 9 is the wood, H8 is the fire, H7 is the earth, H4 is the metal, and H3 is the water point. So कम से कम इनका location हमें classical, that means on the body, we should know and understand. We should be able to locate it. As I've said previously also, कि every acupoint can be located on the body and it can be located
on the Biol meridian. You understand that? Just show me a thumbs up if you understand that. All the points can be located on the body, and for our convenience, it can be located only on the palm also. If we are locating the points only on the palm, these meridians on the palm are called Biol meridians. Correct? I always prefer that you apply the points, if possible, directly on the body, because directly on the body, if we are plotting the point, these are the mother meridians. No? And mother points means the original points. These are only for our convenience. So if you have to apply H9, instead of applying H9 on the Biol, you apply H9 on classical. If you have to apply H7, instead of applying H7 on Biol, apply H7 on classical, on the main body. Is this okay? Clear to everyone? Now let us start with one point at a time. Let us start with the wood point, that is H9. Now, what is this H9 point? H9 point is the last point of H9. H9 is the last point of heart meridian. Where is this point? This point is at the end of the nail. Let me do one thing. First, I will show all the 5 points location on the body, and then I will write down important points about it. Okay, that way you'll be able to understand the location and then understand the explanation. Okay. So first, see the location. Am I visible to everyone? So let us start with H9. Where is H9? H9 is the last point of heart meridian, and it is at the end of the finger. Which finger? Small finger. Okay. This is a yin meridian. Yin meridian means it is on the yin side of the arm. So if I am talking about small finger, then on the small finger, there are two sides. One is this side, another one is this side. There are two lateral sides. Which one do you think is more yin? This is more yin or this is more yin? Inside is more yin. This is how you should remember. Okay. So heart meridian is on the inner side. It is not on the outer side. If it is on the outer side, it becomes more yang. And this is more yin. Okay. So heart meridian is here. And since it is the last point, you will find the point to be very close to nail plate. Where is it on the nail plate? So if we see, I'll draw it for you, but still you understand that at the end of the nail, this corner, see, are you able to see me clearly? If you draw a horizontal line and a vertical line, so this vertical line will be the line which belongs to the nail also. Okay. And horizontal line is the line which is very close, very finely close to the base of the nail. So wherever these two lines are intersecting, that point is H9. Remember one more thing. I've seen people making mistake here. When they are plotting H9, they plot it here, very, very close to the end of the nail. Here. Don't point it here. ऐसा नहीं करेंगे. ये छोटी छोटी गलतियां हैं. हाँ, this is not written in the book, but if you apply a point here and if you leave it for 8 to 10 hours, you will see that the person will have small blister here after 8 to 10 hours. Right? Because this area is so sensitive. आप अपना भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने पेन पेंसिल या जो भी चीज है उससे अगर प्रोब जिस भी चीज से अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ प्रेशर दोगे तो you will find it to be very painful, because all the nerves are ending here. So we will not apply point exactly at the end of the nail. It is almost 0.1 to 0.2 kun away from the nail plate. And then only the person will be able to keep the magnet or the seal. That is H9. H9 is a very, very important point. Why H9 is a very important point? Because this is also Zingwell point.
लास्ट पॉइंट्स एंड फर्स्ट पॉइंट्स आर व्हाट? जिंगल पॉइंट होते हैं ना, नेल के पास में जो एंड होते हैं, जो भी पॉइंट प्रेजेंट है, वेदर इट इज द फर्स्ट पॉइंट और द लास्ट पॉइंट, आर कंसिडर्ड एज जिंगल पॉइंट्स. सबको ये पता है ना. एंड जिंगल पॉइंट आर व्हाट? दीज आर इमरजेंसी पॉइंट. सो अगर किसी को कोई भी टाइप की इमरजेंसी हो रही है, तो उसमें भी आप H9 यूज कर सकते हो, कोई भी इमरजेंसी के लिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ब्रीदिंग या हार्ट से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए, जो भी इमरजेंसी प्रॉब्लम है, अगर उसके लिए आप, इफ यू होल्ड द फिंगर लाइक दिस, so if you're holding it like this, you are actually pressing H9 and SI1. Okay, so in any emergency condition, this point works wonders. This is also a very good point for any irregularity with heart rate. हार्ट रेट बढ़ गई, हार्ट रेट कम हो गई, उसके लिए भी H9 बहुत अच्छा काम करेगा. तो सबको समझ में आया है H9 का लोकेशन? There is one printing mistake, I think, in your treatise 2. If you have treatise 2 in front of you, in the indications it is written H5 right pulmonary valve, H9 left aortic valve. Mine is a Hindi book, so it is written इसके फंक्शन को ठीक करते हैं. So it is not H5, it is it should be H9 only. So H9 right and H9 left, both are correcting the function of pulmonary valve. One is correcting the function of pulmonary valve and another one is correcting the function of aortic valve. If it is H9 right side, that means on the right side, if you are applying H9, this is for pulmonary valve. And H9 on the left side, if you apply, it is for aortic valve. ये ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? So H9 का लोकेशन क्लियर है, very close to nail plate. Now we move to next point. The next point was, after wood, what was the next element? Fire. So which point is fire point for heart? It is the next point, immediately next point. So after H9, it is H8. Where is H8? Heart meridian is a yin meridian. So heart meridian will flow from small finger. Everyone please pay attention. From the yin side, if the meridian is flowing like this, if the meridian is flowing like this, after that it will cross like this or it will cross like this. This is another mistake जो बहुत सारे थेरेपिस्ट एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बार कर देते हैं. जब पॉइंट लगाया तो पॉइंट यहाँ लगा दिया. नो, इट इज अ yin meridian, so point will be here. Okay, so first point is here, H9. Second point is on the yin side. Where is H8? H8 is, if you fold your small finger, see, if I fold my small finger like this, wherever my small finger is touching the palm, it is H8. Wherever my small finger, now don't touch your small finger like this, huh? You don't tell me that ये तो यहाँ touch करने से ये यहाँ हो रहा है तो ये H8 यहाँ आ जाएगा. No, if you fold it like this on the heart meridian only, then wherever it is touching, it is H8. H8 is also an excellent point. बहुत अच्छा और बहुत काम का point है, because H8 जो है ये हमारे हार्ट के वाल्व्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. Heart has 3 types of valves. One is aortic valve, 4 types rather: aortic valve, pulmonary valve, tricuspid valve, and bicuspid valve. These are the 4 types of valves which are present in the heart. Aortic valve is present in the aorta. What is aorta? Aorta is the main vessel which is supplying the whole body. What is pulmonary valve? Pulmonary valve is a valve which is present in the pulmonary artery. What is tricuspid valve and what is bicuspid valve? Tricuspid valve is the valve which is present between right auricle and right ventricle. And what is bicuspid valve? Bicuspid valve is a valve which is present between left auricle and left ventricle. Heart में 4 chambers है ना? 4 chambers है, 2 ऊपर के हैं, 2 नीचे के हैं, ये सबको पता है. Heart has 4 chambers, 2 upper chamber, 2 lower chamber. So उसमें 2 upper and 2 lower में 2 upper 2 1 are called 2 auricles and lower 2 are called 2 ventricles. Out of 2 auricles, one is right auricle, one is left auricle. In the 2 ventricles, one is right ventricle, left ventricle. So in between right auricle and right ventricle, there is a door.
This door opens and closes. This is called tricuspid. Why it is called tricuspid? Because it has three cusps. What is the meaning of cusp? Cusp means flaps. So it has three flaps. So it is a door which has three flaps in it. तो ये तीन फ्लैप बंद होंगे और खुलेंगे तब ब्लड का आना जाना होगा. And in between left auricle and left ventricle, there is a door which is called mitral valve or bicuspid valve. Now, what is this mitral valve or bicuspid valve? It is a door which is made up of bi. Bi means two. Bicuspid, two cusp wala door. Okay. So this H8 is a very important point for tricuspid valve and bicuspid valve. अगर राइट साइड में लगाएंगे तो राइट साइड के वाल्व को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो लेफ्ट साइड. देयर आर सो मेनी पीपल, either they have congenital problem, छोटे छोटे बच्चों को congenital valve की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े लोगों को भी हो जाती है. So it is a very simple yet highly effective treatment for valves. And इसका एक और significance भी है that if you see someone's small finger to be bent like this, अगर आपको दिखता है कि छोटी फिंगर थोड़ी सी मुड़ी हुई है, कुछ लोग बोलेंगे हमारी तो बचपन से ही है. So it is showing that हार्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं वीक है, वाल्व्स में कहीं ना कहीं जो है एनर्जी कम है. Okay, so if you keep applying H8 regularly, then also the finger becomes straight. Now, how will we locate it? You fold your finger, touch the area on the inside of the palm, that is H8, and don't just rely on folding the finger and locating the point. Also, feel it with your tip of the thumb. If when you are feeling it with the tip of the thumb, don't feel it like this. Don't feel it like this. You will not find any pain and any stimulation or sensation on this area. You have to feel it like this. See how I'm holding it. I'm not touching it like this. I'm touching it like this. Why I'm touching like this? Because this is a muscular area. Correct? This is not just skin. This is a muscular area. So you have to go deep to find out the energy, to stimulate the energy. For most of us, it will be painful. ऐसे भी दिल में बहुत सारी चीजें लेकर घूमते हैं, है ना? तो हार्ट के पॉइंट्स तो सबके लिए थोड़े से सेंसिटिव होंगे. So this is a marvelous point. And understand one more thing, that this is a point which is between two metacarpals. यहाँ एक लंबी हड्डी है, जैसे ये दिख रही है ना, ये लंबी हड्डी है. This is a long bone, this is a long bone, this is a long bone, this is a long bone. So if you see 5 long bones on the yang side, these 5 bones are here also, ना, मतलब same bone only. जो यहाँ है वही अंदर यहाँ पर भी तो है ना. So there is one bone here, there is another bone here. In between the two, यहाँ तो हमें channel बहुत अच्छे से दिखता है, यहाँ हमें channel नहीं दिखता है. So you have to press. See, if you press it here, don't you see that there is a cavity here? यहाँ गड्ढा है. Just keep moving down till you reach H8. प्रेशर देते हुए आइए, काफी पेनफुल मिलेगा. Okay, so this is H8. If it is clear to you, just show me a thumbs up. H8 का location. अगर कहीं if Dr. Wall is mentioned, if Dr. Wall is mentioning the point H8 in the protocol, most of the times it is mentioned whether it is right side or left side. If it is not mentioned right side and left side, then apply both sides. अगर TCM के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं, अगर सिर्फ H8 लिखा हुआ है तो apply both sides, right and left. Okay. If tonification and sedation is not mentioned for H8, then apply dry pea seed, because methi seed will not work here. Methi seed is only for fingers or for area where the skin is thin. This is a fleshy area, so methi seed will not work. We will have to apply dry pea seed. If you are applying Biol magnet, then BM1, BM2, BM3 are not as effective as BM4. BM5 becomes little bigger to be placed here. BM4 is the right side to be placed on the palm. आगे बढ़े. H9 clear है. Where was H9? Tip of the, at the base of the nail plate on the small finger, yin side. Okay. Where is H8? H8 is wherever
your small finger is touching. That becomes H8. H8 is not here. H8 is here. Now come to the third point. Wood is over. Fire is done. Now come to wood, fire, earth or humidity. Correct? So what is this earth or humidity point on heart meridian? Third point. It is H7. First was H9. Sorry. Then is H8. Third is H7. H7 is a marvelous. Why marvelous point? Mine to one of the favorite point. Why? Because this is called Shenmen. Shenmen means calming the mind. It calms the mind. मन को शांत करने वाला, दिमाग को शांत करने वाला. It is also a point which is part of Buddha's triangle. So along with your LU9, your P6, this H7 works wonders. P6 और LU9 के संग जब हम H7 देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन. Now location of this point. When we locate this point H7, most of the therapists, they make mistake while locating H7. देखने में सुनने में बहुत easy है. H7 कहाँ है? Wrist के end पे. Which side? Radius side और ulnar side? Ulnar side. है ना? इतनी सी बात से हम खत्म हो जाते हैं कि this is H7. No, this is not H7. When you are locating H7, देखिए एक इसको फील करने की कोशिश करिएगा. You do one thing on the ulnar side, that is small finger side. You just hold your wrist almost 2.5 इंच दूर आ जाइए from the wrist crease and hold it like this and just horizontally इसे ना feel करिए. Do you feel any cord or hard structure here? Like I can feel. Can you see there is a groove also here? Because this is a hard structure. Can you see this hard structure here? I can feel this hard structure inside. Right? You have to feel it. You just feel it horizontally. Vertically, you cannot feel it. Horizontally, you will be able to feel that something hard is there inside. So feel this hard structure up to the wrist. इसको ऊपर तक feel करिए. Okay? So this hard structure is here also. अगर यहाँ सिर्फ feel करेंगे ना, you will not be able to make it out. पहले यहाँ feel करेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन से hard structure की मैं बात कर रही हूँ. So if you feel this hard structure here, of this hard structure, come to the radial side. That means if this is the hard structure here, this is not H7. Where is H7? H7 is on the radial side of the hard structure. Clear hai? I'll tell you. If I read out H7 for you, it is mentioned at the ulnar end of the transverse crease of the wrist in the depression on the radial side of the tendon of M flexor carpulnaris. देखो टेंडन का नाम अगर हमें नहीं भी याद रहे ना, उसे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा. हमें क्या याद रखना है? दिस इज अ हार्ड स्ट्रक्चर हियर विच इज अ टेंडन. Of the tendon we have to come to the radial side. So if you touch your wrist here, wherever you are finding a groove after the hard structure, like this is a groove, you can see this groove here also. See, in my wrist it is so clear. See this groove, this is the hard structure, tendon. And this is the groove. So this is it. Can you see on my wrist? दिख रहा है? If I am just flexing it like this, पीछे मैंने इसको खींचा है, then you can see this tendon very clearly. So on the tendon, you come to the radial side. This is clear. मुझे दिखाकर अभी कुछ नहीं होगा, अपना अपना फील करेंगे सब.
Is this clear to you? If it is clear, just show me a thumbs up. I'll repeat it again. H7 is on the wrist crease. H7 का है wrist crease पे है. Which side? Wrist crease तो इतनी चौड़ी है. This is your small finger side. So heart meridian is on the small finger side. So on the wrist crease, we have at the small finger side we have H7. But this is not the location of H7. Here you will find that there is a hard tendon. So come to the thumb side of that tendon. That is H7. सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की. ठीक है, क्लियर है? H7 is a very, very important point for calming the mind, especially. H7 is also called spirit gate. It is also called gateway of spirit. Spirit gate या gateway of spirit. धड़कन, सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलना, छाती में भारीपन, काम करने की शक्ति का न रहना आदि में इस बिंदु पर उच्चार में. अच्छा, there is one more very important part of this point, H7. This point is also considered as a point that corrects the functioning of bundle of his. दिल और दिमाग ये दो अलग अलग चीजें हैं ना. दिमाग अपना काम करता है, दिल अपना काम करता है. बोलते हैं ना, दिल की सुने कि दिमाग की सुने. Why? Because दिमाग is something that has a nerve connection to and fro and connects to the whole body. But heart is the only organ that has its own electrical supply. इसी में आता है आपका SA node, AV node, bundle of his and Purkinje fiber. So this bundle of his is a very important part of the electrical supply of heart. If someone has some problem with bundle of his, or if someone has some problem with the electrical connectivity of heart, then also H7 treats it. तो लिख कर रखेंगे, H7 is a very important point for bundle of his. Okay. So first was H9, second was H8, third is H7. Now come to fourth one. Wood, fire, earth. Now next is metal. Where is this metal point? Metal point is H4. H4 को लोकेट करने का बहुत अच्छा तरीका है. अगर कुन याद भी नहीं रहे ना, 1.5 कुन है, 2 कुन है, 2.5 कुन है, नहीं याद रहे, आपको क्या याद रखना है? If you place 4 fingers one after the other, all the 4 fingers if you place, starting from H7, if I place all the 4 fingers close to each other, I should not make any gap between the 4 fingers. It should be very close. And if I start from H7, the wrist joint, okay, and if I place 4 fingers, and under my fourth finger is H4. ये सब पॉइंट्स जो है ना, H7 के बाद H6, then 5, then 4, ये आधे आधे कुंड पर है. तो आधे आधे कुंड को मेजर करना बड़ा मुश्किल है. तो आप क्या करो, यहाँ 4 फिंगर्स रखिए, and under your 4th finger is H4. H4 is also very important point. All the points are very important point, but this is a marvelous point. Why? Because if someone is under shock, or shock may if the person is not speaking properly, or if the person is unable to stand properly due to trauma or shock, तब भी H4 बहुत अच्छा काम है. H4 is also a very important point for arthritis of the elbow. आर्थराइटिक पेन के कारण अगर एल्बो में दर्द है, तब भी H4 बहुत अच्छा काम है. Location of H4 is clear to everyone. Place 4 fingers. Under the 4th finger is H4. Again, this is in the groove only. It is not on the tendon. Understand one thing. All the points, whether it is all the points which are on the body, these are not directly on the bone.
or tendon or ligament or blood vessel. Why? Because ultimately the same points are also the points where acupuncture is done. ये सिर्फ वो पॉइंट नहीं है जहां एक्यूप्रेशर करेंगे. हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, बट दीज आर ऑल्सो द लोकेशंस फॉर एक्यूपंक्चर. करेक्ट. सो अगर एक्यूपंक्चर इन पॉइंट्स पर हो और ये बोन पर हो या लिगामेंट पर हो या टेंडन पर हो या ब्लड वेसल पर हो, then these points will become very very painful for the patient. That is why the points are always marked on grooves and creases. जहां पर थोड़ी जगह मिल रही है, जहां निडल के जाने की जगह है, वहां पर हमेशा पॉइंट का लोकेशन है. सो इफ यू हैव टू लोकेट H4, then H4 is also in the groove. Can you feel a groove here? That is H4. Come to the last point. Wood, fire, earth, metal, then water. The fifth point. Water point is H3. Where is this H3? H3 is in the elbow crease, near the elbow crease. Where is it near the elbow crease? Outer elbow crease or inner elbow crease? Definitely it is inner elbow crease. Why inner elbow crease? Because it is a yin meridian. This is yang. This is yin. Correct? So on the yin side, the meridian is flowing. Now where is H3? If you fold your arm like this, then you can see a crease here on the elbow. And this is the end of the elbow crease. Correct? So you locate it. इसको समझ के रखेंगे. This is the end. And if you feel your elbow here, just in line with your elbow crease. No? Don't feel it here, here, here. Just in line with the elbow crease. If you feel it, you will feel an elevation in the bone. A bony elevation here. See, this is बहुत बार यहाँ चोट लगने से ना करंट जैसी फीलिंग होती है. ऐसा बहुत लोगों ने फील किया होगा. So this is a bony elevation of actually the humerus. This bone is what? Humerus. These are radius and ulna. इस बोन का raised part ये at the end of the elbow crease. You'll be able to locate it. So this is a bony elevation here. Okay. So if I place one finger here and at the end of the crease here, then in between the two, this point and this point, the center point is H3. This point is H3. Just hold it here and give pressure, a strong pressure. So you are actually touching the water point of heart meridian. Is this okay? H3 at times is a very, very important point for tennis elbow, golfer's elbow, tremors in the arm, pain in the elbow. At times we use H3 as single point for redness in the eye also. आंखों में बहुत बार रेड हो जाता है ना, सिंगल पॉइंट है H3. But it should be located correctly. If you don't place it correctly, then it is not going to give you any result. Clear हुआ? I'll explain it again. H3. This is your heart meridian, which is crossing the elbow also. When it is crossing the elbow, then at the end of the elbow crease is H3. मैंने बोला elbow crease के बाद आता है H3. But where is it? कैसे खोजेंगे इसको? This is the end of the elbow crease, है ना? ये तो दिख रहा है सबको? Yes or no? This is the end of the elbow crease. If you go straight, you will find that there is a bony elevation here. You go straight from the elbow crease. Are you able to find out a bony elevation? Don't go up to the tip of the elbow. ऐसे जैसे मैंने प्लेस किया ना, वैसे ही आप रखिए और इसी तरीके से बिल्कुल आप जाइए and you will find that there is a pointed end here. देखिए, this is a pointed end.
You place one finger here, you place your middle finger here, and end of the elbow crease, you place your thumb. यहाँ तक किया. In between the two, place your index finger. This is your H3. If you open your arm, you will see that H3 comes here. हम बड़े randomly H3 को यहाँ लगा देते हैं. You should always plot the point as correctly as the tip of the needle. Then only it will work on the body. Otherwise, you apply H3 on the beard. Clear? So I'll show you the pictures of all the 5 points. That way it will be more clear to you. Let us start with the first one. H9. Where is H9? See, there is a difference between theoretical knowledge and practical knowledge. So this is theoretical H9. I will never put a seed here. आप इस बात को बहुत clearly समझ लीजिएगा. I will never put a point here on H9. Why? Because if I put a point here on H9, it will be very painful. If someone is puncturing H9, if the person punctures it here, that is perfectly fine, because puncture is only for some time. If you are doing acupressure, then you have to apply the seed for 8 to 10 hours. And keeping a seed here for 8 to 10 hours means a blister, skin rashes, or even the skin comes out from this region. So what I will do, if this is the small finger, then instead in the theoretical book, it is mentioned as here, but we will not apply it here. Instead of that, we will place the seed here, little away from the original point. Okay, so this will be less painful, close to the epicenter, and highly effective. Why highly effective? Because this location is also the location of Dr. Wall's H9. Okay? Is this clear to everyone? H9 location. इसको नोट डाउन करके रखेंगे, अदरवाइज थोड़े दिनों में फिर भूल जाएंगे. Now we move to next point, H8. Where is H8? If you fold your small finger on the yin side of the palm, then you will see that it touches H8. Okay. So when you are giving pressure to stimulate H8, it should be between the two bones. So your point should not be on the bone. It should be in between the two bones in the gap. Then only it will work. If you place your seed instead of gap, if you place your seed here or here, it will be painful for the patient. Okay. So your point is in between the gap. H8 is here. This is H8. So you place a dry pea seed here. Okay. After that, we move to next point, H7. Where is H7? We said that H7 is if we are plotting H7, first locate the wrist crease. After finding out the wrist crease, find out where is the strong tendon. After locating the strong tendon,
most of the times I've seen that people plot it here, H7, in the groove. No, that is not H7. You have to come to the radial side. Radial side means towards the index finger. Okay. So towards the radial side, you will find another small groove, and this is H7. Okay. After H7, the fourth point is H4. Locating H4 is very simple. Why it is simple? Because you just have to place 4 fingers. Whose 4 fingers? Not yours. Patient's. So if you are locating the point on the patient, it should be patient's 4 fingers. So under the 4th finger, we have H4. Okay. 4 fingers is equal to 3 kun. So 2 fingers is equal to 1.5 kun. But when we are placing 2 fingers to measure kun, then your fingers middle joint is what you are considering, right? But when I am asking you to place 4 fingers, you are just touching the tip. You are not touching the middle joint, the pitta joint. Is this clear to everyone? There is a difference between the thickness of the tip of the finger and the middle joint. Middle joint, see, is much more thicker in comparison to the tip of the finger. To make it easy, I said that you place 4 fingers under the 4th finger, H4. But if you are measuring through kun, then it is a middle joint of 2 fingers. Then you find out H4. It's written 1.5 kun. So by placing 2 fingers middle joint, you can find out H4, or simply by placing the tip of all the 4 fingers under the 4th finger also, you can locate H4. Is this okay? Clear to everyone? Both the ways I have explained. So this was H4. And then we have H3. So if we are locating H3, how do we locate it? So this is the elbow crease. Are you able to see the green line? This is the elbow crease. Okay. And this is the tip which I'm asking you to locate, the bony tip. So if you connect both these two, end of the crease and the bony tip, then this point H3 is actually the center. So this is half kun, this is not half kun, this is actually the center. Is this okay? So how are we locating it? End of the crease, tip of the bone, the center point. And it is in the line of the elbow crease only. So there's no way that you can miss it out. Wherever your elbow crease is there, if you keep on moving ahead, somewhere in the same line only, before you reach the tip of the bone, you will have H3 for sure. So that point is also a painful point in the case of the ailment. So these are all the 5 points that we wanted to understand in case of heart meridian. So where is the first point? Just keep on showing me the location on your fingers also. H9,
H8, H7, H4, and H3. So how many of you feel that you were locating some of these points incorrectly? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपने इसमें से ये 5 पॉइंट्स में से भी कुछ पॉइंट्स को इनकरेक्टली प्लॉट कर रहे थे अभी तक? दैट इज व्हाई आई फील दैट क्लासिकल लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, है ना? प्रोटोकॉल हमें हमारे पास बहुत सारे हैं, मेथड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, बट जो प्रोटोकॉल हम यूज करें उस प्रोटोकॉल को करेक्टली लोकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सही प्रोटोकॉल है, सही डायग्नोसिस है, लेकिन लोकेशन ऑफ द पॉइंट इनकरेक्ट, इज इट गोइंग टू वर्क? बिल्कुल भी नहीं काम करेगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई एम डन. You can unmute yourself. Raise your hand, we'll take you one by one. Durga ji. मैडम, H8 को लेने के लिए मैं जो तरीका बताता हूँ वो सही है कि नहीं थोड़ा जानना चाहता हूँ. ये सामने से थोड़ा वही ग्रुप निकालने के लिए दिक्कत होती है क्योंकि वो मेटाकार्पेल्स है, तो इधर से मैं लेके आता हूँ. बिल्कुल जिधर बिल्कुल, जिधर मिलता है उसका अपोजिट साइड पे मैं वो हम जड़ी लोग करता स्कूल हूँ. में करते थे. मैथ के सम को आंसर करेक्ट करने के लिए पीछे से शुरू कर देते थे. जी जी मैडम. बिल्कुल, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो आपने दिमाग मैडम लगाया, आपने पीछे से इसका मेटाकार्पल के बीच का लिया एंड बैंग we ऑपोजिट. can't see you, madam. We can't see your photo. यू कांट सी मी? Madam, we can't see your photo, madam. We can't see you. No, I have But I pinned am both of on. y'all. I have pinned, so Yes, but everyone We can see. can see, ma'am. We can see. We can see, ma'am. Can see. just flap your screen, No, madam. swipe your screen. I think you'll be able to see. ओके So Durga थैंक ji, correctly यू. ओके you थैंक have यू. said, आप पीछे से उसको फाइंड आउट करने के लिए पीछे से करके आगे बिल्कुल देख सकते जी हैं. क्योंकि सामने से जो करते हैं ना इधर उधर होता है तो इधर हाँ दिक्कत हाँ, तकलीफ बिल्कुल होता है, तो बिल्कुल, इसलिए मैं मेरा आई दिमाग एग्री. लगाया था, लेकिन बिल्कुल पता बिल्कुल, नहीं था ये बहुत मेरा बढ़िया, दिमाग सही है कि नहीं. एकदम सही है, सही चल रहा है. यस, नेक्स्ट फातिमा जी. Good evening. यस, गुड इवनिंग फातिमा जी. अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. Okay. You know, I have a friend who have a heart blockage, and I test the point H9, H8, everything, but only H9 you can feel the pain. But I don't really know what to do. I simulate the point, but what can we do in this case? हाँ, but I need the proper case history. Which artery or which vessel has a blockage? How much is the blockage? Should we take the case or not? Because it is about heart. It's a sensitive issue, right? Yeah. So in general, I cannot tell you that these are the points for heart blockage. Is doctor going to give you the medicine just by listening to the word heart blockage? No. He will ask for a series of tests. Then he will understand where is the blockage, how much is the blockage, who is the patient, what is the age, is it recoverable, or the person needs a stent, whatever precautions the patient has to take. Is he on a blood thinner? Cholesterol is how much? Liver function is how is the liver function? Then only you will be able to take the case. Taking the case is also very important. Whether I will take the case or not, that also depends. If I feel that there is 95% blockage, I will not take the case. I will not touch the patient. I will say that you go for modern medicine treatment. If surgery is needed, please get it done. Okay. So we have to see the patient. We need more details about it. Then only we will do it. Yes. Okay.
Thank you. Yeah. Thank you. Yes. Neelam ji. Neelam Kenny. Yes. नमस्ते मैम Namaste. मैम सो H8 ये इनयांग बॉर्डर पे आता है व्हेन वी H3. ओपन सॉरी H3 इनयांग बॉर्डर पे आता है व्हेन वी ओपन इट हाँ हाँ बिल्कुल थैंक्स ठीक है. Yeah. So I think yes प्रीति जी. नमस्ते चंचल जी, गुड इवनिंग। नमस्ते. गुड चंचल जी, इवनिंग. जैसे अभी आप अभी बता रहे थे, तो हम जैसे ये 88 का लोकेशन फाइंड करें, तो यहाँ स्लाइटली पेन आ रहा है लेफ्ट हैंड में, बट राइट में नहीं है, तो क्या लेफ्ट वाले पे हम लोग यहाँ मटर दाना लगा के छोड़ सकते हैं? एब्सोल्युटली बिल्कुल लगा के छोड़ सकते हैं. ओनली वन साइड, बिकॉज एकदम राइट साइड में कोई पेन फील नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ओके जिस साइड पेन आ रहा है उस साइड थोड़ा मटर का दाना लगा लीजिए. मे बी वहाँ एनर्जी सर्कुलेशन इज वीक, मे बी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वॉल्व इज वीक. ओके At times what happens is the body guides you and gives you the diagnosis that will not come in report. ओके Okay, तो आपको बॉडी को सुनकर आपको ट्रीटमेंट करना होता है. So this is also like that only. Apply dry pea seed for some days, you will see that pain will be gone. ओके, थैंक यू सो मच। आशा जी. Namaste, ma'am. नमस्ते. Ma'am, nice class. Ma'am, Thank you. some of the books I've read that we should not sedate any of the heart points. Is that right? No, it is not written as do not sedate heart point. It is written do not sedate heart. Okay. Do not sedate heart means heart is an organ which is functioning continuously. So you cannot sedate heart. And Okay. H5, the fire point, we should not sedate, ma'am. I'll not comment on that because it depends what type of problem the patient has. Okay. Okay. In general, I will not say that you put a sedate magnet here on the heart correspondence. That way you are sedating the whole organ. Okay. Okay, ma'am. Is this Got it. clear, Asha ji? Yeah, I got it. Yes. When we put on the correspondence, the whole organ will be sedated, the function will be low. So you don't have to do that. Don't do that. Got it. Yeah, got it, ma'am. Thank you. Ajit ji. नमस्ते मैम। नमस्ते. मैम मेरा एक डाउट था क्या है कि एलोपैथिक में जब जैसे इंजेक्शन लेते हैं एंगल लेके, जैसे कि हमारा एक्यूपंक्चर में वैसे जो पंप करना है कुछ डिग्री के वाइज एंगल, कौन से एंगल में और कितना टाइम में एक्यूपंक्चर तो होता है कौन से एंगल में करते हैं, और एक्यूप्रेशर में जो प्रेशर करेंगे कितना टाइम तक वो दबाना है या कितना प्रेशर कितना जोर देना है, वो प्रेशर कितना है कैसे वो डिटेक्ट करेंगे? प्रेशर पेशेंट को उतना ही देना चाहिए जितना पेशेंट ले सके. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया मतलब बहुत अच्छा काम करेगा. तो ठीक है ना? कितना टाइम तक, मैंने कितना ये टाइम तक? इफ यू आर अप्लाइंग सीड देन वी से 8 to 10 hours. अगर सिर्फ अप्लाई हाथ से मसा हाँ 8 to 10 आवर अप्लाई करने के लिए वो सीड्स अप्लाई करना है ओवरनाइट. ड्राई पी सीड अगर आपने लगाए है H8 पर फॉर एग्जाम्पल, तो ओवरनाइट छोड़ेंगे उसे. अगर हाथ से मसाज कर रहे हैं देन मे बी 1 minute, 1.5 minutes. दैट इज ऑल्सो गुड टाइम, राइट? वो कितना सुनने में टाइम 1 तक मिनट 2 मिनट लग रहा है, लेकिन वो करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1 मिनट हुआ ही नहीं है, बहुत देर से करे जा रहे हैं. तो आप अगर ड्राई पी सीड लगा रहे हैं तो ओवरनाइट छोड़ेंगे. और जो प्रेशर जो एंगल के है वो हिसाब से बच्चे को, एंगल हमेशा ग्रूव के अंदर होता है. इट शुड बी इन द ग्रूव. जैसे अगर आप प्रेशर दे रहे हैं तो आपका प्रेशर जो है वो टेंडन पर, बोन पर नहीं होना चाहिए. योर प्रेशर शुड बी इन द ग्रूव, गड्ढे के अंदर होना चाहिए. करेक्ट? बट अगर आप हार्ट मेरिडियन के H9 पर प्रेशर दे रहे हैं तो आपका प्रेशर टुवर्ड्स H9 हार्ट मेरिडियन होना चाहिए, वर्टिकल. वर्टिकल इतना डिग्री ऐसे सीधा इसमें रहेगा डिग्री या नहीं है. ऐसा ये तो आप कुछ? निडल नहीं डाल रहे ना. यू आर अच्छा नॉट इंसर्टिंग निडल, यू आर गिविंग प्रेशर. सो यू आर स्टिमुलेटिंग बाय गिविंग प्रेशर. So उसमें you are doing, you are touching the point by just giving the pressure. Okay? हाँ जब आपका नीडल होता है तब आपको देखना होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है. वर्टिकल जाना है, एंगल में जाना है, हाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए, सुपरफिशियल होना चाहिए, हाँ पैरेलल टू द स्किन होना चाहिए. वो अलग डिफरेंट केस है. यहाँ तो आपको स्टिमुलेट करना है.
यहाँ पे एंगल से कोई मतलब नहीं। ओके, थैंक यू मैम। अंजलि जी, देन कंचन जी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम Good H evening. को लोकेट करने के लिए आपने एक मेथड तो ये 4 फिंगर्स वाला बताया। नहीं, ये 4 फिंगर्स नहीं बताया मैंने, ये 4 फिंगर्स बताए। आप ऐसे रख देंगे तो ये तो कुन 3 कुन हो जाएगा। ये 4 फिंगर्स मैंने बोला कि आप टिप को ऐसे टच कर देंगे तो 4th फिंगर के नीचे आपका H4 होगा। करेक्ट। एंड मैम 2 फिंगर्स वाला क्या कॉन्सेप्ट था, वो मुझे 2 नहीं क्लियर फिंगर्स हुआ। वाला तो ये बस ऐसे रखना है। आपका मिडिल जॉइंट जो है ये आपका कुन बताता है, तो यहाँ पे आपका H4 आएगा। सेम चीज जब आप 4 फिंगर्स का टिप को टच करेंगे तब भी यही ही पॉइंट आएगा। यू चूज योर्स, जो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल है। ओके, थैंक यू। ठीक है, कंचन जी। नमस्ते मैम, नमस्ते। बहुत अच्छी क्लास थी मैम और बहुत थैंक यू मजा। मैम मुझे वो सिडेशन वाला नहीं समझ में आया जो आशा जी ने पूछा था ना, और आपने बताया कि पाम हार्ट पे को सिडे हम डायरेक्टली सिडेट नहीं करते हैं। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हार्ट को हम कभी सिडेट नहीं करते हैं। सिडेट मतलब ऑर्गन के ऊपर में सिडेट का मैग्नेट नहीं लगा देंगे। मतलब ये कॉरेस्पॉन्डेंस पे। कॉरेस्पॉन्डेंस पे। ओ, ठीक है, बस इतना ही बात समझने का, और कुछ ज्यादा नहीं। बाकी अगर पॉइंट्स है तो वो पॉइंट्स पे अगर कभी आपका कोई पॉइंट सिडेशन का आ रहा है तो वो आप यूज कर सकते हो। एक्चुअली ये बात हमारे आज के क्लास से रेलेवेंट नहीं है। हमें ये समझना है कि पॉइंट्स का लोकेशन क्या है। देखिए, देर इज सो मच इन दिस ओशियन, बट इफ वी लूज द फोकस देन वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। मैं प्रोटोकॉल्स की चर्चा आज नहीं कर रही हूँ, केस हिस्ट्री की चर्चा आज नहीं कर रही हूँ। उसी तरीके से पॉइंट्स के टोन सीडेट की चर्चा भी आज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आज हमारा लोकेशन पर फोकस। फोकस इज टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ द 5 शू पॉइंट्स। थैंक यू मैम, बस वो सिडेशन नहीं समझ में आता कहानी। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। शशि जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम एक्चुअली पॉइंट्स ही पूछना था मुझे कि मुझे एक्चुअली अचानक सा मुझे पैल्पिटेशन होता है, मेरा सेल्फ अचानक से पैल्पिटेशन होने लगता है, फिर बहुत घबराहट होने लगता है। फिर तो उसके लिए मैम क्या ये हम लोग जो हार्ट पॉइंट हम लोग इसमें से देखे हैं, क्या इसमें से पॉइंट दे सकते हैं क्या मैम? पैल्पिटेशन होता है तो फर्स्ट आप डायग्नोस करिए कि पैल्पिटेशन क्या होता है। आप फाइंड आउट करिए कि आपका हीमोग्लोबिन कैसा है। आप फाइंड आउट करिए आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। आप फाइंड आउट करिए कि आपको ये कब होता है। ये सारी चीजों को देखकर आप कारण निकालिए कि ये पैल्पिटेशन जो है ये ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने से हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम होने से हो रहा है, ब्लड की कमी होने से हो रहा है, पीरियड्स के पहले या बाद में हो रहा है, कोई आप किसी के सामने कुछ करने जा रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं तब हो रहा है। ये हर चीज का कारण अलग अलग। अगर बीपी के कारण हो रहा है देन बीपी इज अ रूट कॉज। अगर आपका हीमोग्लोबिन या ब्लड कम है तो आपको हीमोग्लोबिन और ब्लड को बढ़ाने से काम होगा, तब आपका हार्ट के पॉइंट पर काम करने से नहीं होगा। अगर स्टेज पे चढ़ने से या किन्हीं लोगों के सामने कुछ प्रेजेंटेशन देने से आपको पैल्पिटेशन हो रहा है तो एंजाइटी के पॉइंट्स पर काम करने से पैल्पिटेशन कम होगा, तब आपके हार्ट के पॉइंट से नहीं होगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग जो मैं बताना चाहती हूँ? कारण पर हमेशा इलाज करेंगे। खाली पैल्पिटेशन, बेचारा हार्ट धड़कने लगा तो इससे हार्ट से पूछिए तो सही कि क्यों धड़क रहे हो। किसी को देखकर धड़क रहे हो तो हो सकता है उससे प्यार है इसलिए हार्ट धड़क रहा है, तो उसमें क्या आप ट्रीटमेंट देंगे? बात को समझ गए? ऑलवेज ट्रीट द रूट कॉज। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, सो दैट